आपको बताऊंगा। सेमेस्टर 5 में बहुत अच्छा रिस्पांस सभी को मिला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि सर सेमेस्टर 6 में भी ऐसे ही अगर क्रैक सीरीज हो जाए तो हम जैसे जो स्टूडेंट्स है जो कॉलेज में रेगुलर कुछ कारण के वजह से नहीं उपस्थित रह सकते हैं, उनके लिए एक क्रैक सीरीज बहुत ही असरदार, बहुत ही फायदेमंद हो रही है और बहुत सारे लोग उसका फायदा ले रहे हैं। और हमारे सबसे पहले तो मैं हमारे कॉलेज के चेयरमैन संस्थापक प्राचार्य डॉक्टर जे.सी. पुरुषवाणी सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये क्रैक सीरीज करने का हमें मौका दिया, हमें प्रोत्साहन दिया। एक्यूएसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खुशबू पुरुषवाणी मैडम जो चाहते हैं कि हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा मिले, कुछ हमारे स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट्स हो जाए, क्योंकि कोविड-19 के जो 2 साल गए हैं लॉकडाउन में, उसके वजह से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो पढ़ाई के लिए उतने पॉजिटिव नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये क्रैक सीरीज का बहुत ही ज्यादा फायदामंद हो रहा है और हम लोग बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे लेक्चरर है, जो हमें व्याख्यान देने वाले लोग हैं, जो अच्छे वक्ते हमारे पास यहाँ पे उपस्थित है, तो उनके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक जोरदार क्लैपिंग करें हम लोग सब लोग उनके लिए। आज के जो हमारे जो व्याख्याता है, आज के जो सेशन के हमारे स्पीकर है, उनका मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। उनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार प्रहलाद लोखंडे जी, जो के.वी. पेंढारकर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर करके काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे उनके जीवन में बहुत सारा काम किया है, लेकिन उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है सत्यशोधक जो मूवमेंट्स है उसके बारे में वो काम कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं। उनका रिसर्च का सबसे इम्पोर्टेंट वो रोल है। उन्होंने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल जो वर्कशॉप है, सेमिनार है, उन्होंने अपने पेपर प्रेजेंट किए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो मुंबई यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट इतिहास विषयात मधील पीएचडी गाइड करके वो काम कर रहे हैं। तो आज के जो हमारे स्पीकर है, जो नन अदर डॉक्टर अजय कुमार प्रहलाद लोखंडे सर, जो बहुत ही बेहतरीन व्याख्याता है और उनको हम लोग को यहाँ पे बुलाने का मौका मिला, उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपना कीमती समय लेके यहाँ पे आए। तो मैं आपको यहाँ पे वेलकम करता हूँ और आप सर हमारे बच्चों को मार्गदर्शन कीजिए। ओवर टू यू प्रहलाद सर। Thank you, sir. So today we'll see the important points on history of Asia. Let me share the screen first. We will study it with the PowerPoint presentation, and it's a very important topic, history of Asia. In first semester, in fifth semester, we have studied contemporary world. So this Asia is just extension of that contemporary world. And right now, in this geopolitical context, in the present politics, it is very interesting for us to know about Asia. आज के जमाने में हमें एशिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एशिया में चीन है, पाकिस्तान है, थाईलैंड है और हमारे पड़ोसी देशों में के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी आगे चल के हम अच्छी पॉलिसी उनके साथ निभा सकते हैं या बना सकते हैं. So it is very important to have a first hand knowledge about Asia. So let me share the screen first, then we'll see with our PowerPoint presentation. Is this screen visible? See the screen? Yes sir. Go ahead. Okay. So now here is the screen, and first we have to look at the time period 1945 up to 2000.
So we'll deal about the history of Asia between these time zone 42 up to 2000. 1945 से 2000 तक जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं एशियन कंट्रीज में, उसके बारे में हम देखने वाले हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें फर्स्ट चाइना, the transition in China. We all know that China was a democratic country before 1949. In 1949, it witnessed the growth of communist regime. 1949 में वहाँ साम्यवादी गवर्नमेंट अस्तित्व में आया, and henceforth the policy of China changed completely. China, which was one of the greatest friend of India, 1949 onwards, it became a communist country and Soviet Russia became its greatest friend. So China had to deal internally and externally. China witnessed two type policies. Internal policy means domestic policy and foreign policy. According to the new Sir, sorry for interrupt. Sir, sorry for interrupt. Communist China, they completely changed their internal policy of domestic policy under Mao Zedong. In 1949, Mao Zedong became the chairman of China, and he was a die-hard communist. So all the internal programs of China, they were shaped according to the communist ideology. 1950 के बाद चाइना में साम्यवादी गवर्नमेंट आने के बाद उनकी अंतर्गत पॉलिसी जो भी है वो पूरी तरह से साम्यवाद से प्रभावित है, कम्युनिज्म से प्रभावित है. And so according to it, they had different kind of programs and different kind of activities. The planned activities, they had a great impact of 5 years plan of Soviet Russia. जो पंचवर्षीय योजना है वो भी उन्होंने लाई. So in this internal policy of China, the foremost important policy is agricultural activities, industrial activities, and communes. So basically, China was a big country and most of the land was under the control of big landlords and zamindars. So initially, Mao Zedong and communist regime of China, they distributed lands among the landless labor, and so common landless labor became happy. Initially, this program was initiated by communist regime. उन्होंने जो बड़े-बड़े जमींदार थे, उनसे जमीन हथिया ली और छोटे-छोटे लैंडलेस लेबर थे, उनको जमीन बांट दी. तो ऐसा लगा कि एक अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है. However, this tempo soon turned into evil events when Mao Zedong started Great Leap Forwards and Great Communes. So in Great Leap Forwards, which is better known as Hanumanudi in Marathi books, या ऊंची झेप या बड़ी झेप ऐसा कहा जा सकता है उसको Great Leap Forward को. This was a program initiated by Mao Zedong to achieve high targets in agricultural field and in industrial fields. He set high targets. उसने बड़े-बड़े टारगेट रखे और इसके लिए लोगों को जबरदस्ती कम्यून में बांटा गया. So all the peoples, they were bifurcated on the basis of village. They brought together to work hard, and the family life was disturbed. और इस तरह से लोगों को जबरदस्ती एक जगह बुलाया गया, उनसे काम कराया गया, उनके लिए एक सामूहिक खेती का आयोजन किया गया, उनके लिए सामूहिक किचन था, सामूहिक बाथरूम था, सामूहिक खाना था. इस तरह से माओ सेतुंग को ऐसा लगा कि सब एक साथ करने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा. Great Leap Forward में उसके एक्सपेक्टेशंस थी कि प्रोडक्शन विल इंक्रीज, and all the production was to be taken by the government. Since government has given them food, government has given them fertilizers, government has given them all the equipments. तो खेती के लिए जो भी गवर्नमेंट ने दिया था, इसलिए जो भी प्रोडक्शन आता था वो सब गवर्नमेंट को लेना था. So basically people didn't like this. People soon understood that कितना भी काम उन्होंने किया तो भी आधे से ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट के पास जाने वाला है, उनको कुछ मिलने वाला नहीं. All the surplus production was to be taken by the government. So people sometimes they neglected the agricultural work, or sometimes they just didn't work it at all. So all the targets set by Great Leap Forward and in commune, they were never achieved. Great Leap Forward में जो भी टारगेट रखे गए वो अचीव नहीं किए गए, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि जो भी वो काम करने वाले हैं वो सब गवर्नमेंट लेने वाला है. So basically these two schemes failed
miserably, greatly forward and communist. In the same way, Mao Zedong set a high target for industrialization of China. So initially, Soviet Union helped them, Soviet Russia helped a great deal to China because China was a new communist country, Soviet Union was a communist country. So out of friendship, Soviet Union helped them. पहले उनको सोवियत यूनियन ने बहुत से मदद की. सोवियत यूनियन ने क्वालिफाइड डॉक्टर्स भेजे, क्वालिफाइड इंजीनियर्स भेजे और उनको अच्छे टेक्निक दी. लेकिन इस सब के बावजूद भी because of the great leap forward and because of the ill-planned commune, China received greatest setback in its earlier 10 years, from 49 up to 59. पहले 10, 11, 12 साल में चाइना को जबरदस्त सेटबैक मिल गया because of ill-planned activities. Ill-planned, जिसका कोई प्लानिंग नहीं था, जिसके पीछे कोई रैशनलिज्म नहीं था, सिर्फ एक डिस्पोटिक हुकुमशाह, एक तानाशाह था माओ त्से तुंग, वो जैसा कहेगा वैसे ही हो रहा था. So because of this, production never achieved. So you will find the frustration why China attacked India in 1962. This was the basic reason that China failed in greatly forward. China failed in commune. Many people died in inflation, in drought. Somehow China wanted to divert the attention of the people. So they attacked India in 1962. 1962 war इसी का नतीजा है because of the failure of these two schemes, greatly forward and commune. Then soon Mao understood that his two schemes failed. So he initiated a new scheme, and that is let 100 flowers bloom, let 100 thoughts contend. In Marathi you can say शंभर फुले उमलू द्या, नवीन विचारांचे स्वागत करूया. हम नए विचारों का स्वागत करेंगे, हम नए विचारों का स्वागत करेंगे. इसका मतलब हम लोगों को फ्रीडम देंगे because freedom was always denied to the people. Freedom of thought, freedom of expression, freedom of worship. State just give you guarantee of livelihood, wages, but state cannot give you freedom. So Mao identified that people were unhappy, so he thought that we should give them freedom. So he offered a new slogan कि हम तुम्हें विचारों का स्वातंत्र देते हैं, लेकिन ये उसकी जबरदस्त एक चालबाजी थी. He noted all the opponents who criticized the government. Meanwhile, उसने जानबूझ के किया कि तुम्हें फ्रीडम मिल गया, you can criticize the government. स्लोगन भी बड़ा कैची था, let 100 flowers blossom, let 100 thought bloom. मतलब जैसे फूल उमलते हैं वैसे हम विचारों का स्वागत करेंगे, नए विचार आने दो, क्रिटिसिज्म आने दो. लेकिन एक चाल थी, जिसने क्रिटिसिज्म किया उसका उसने नोट रख दिया, बराबर नोट किया किसने क्रिटिसिज्म किया. So basically it was not a liberal thought, it was not a movement of liberalism, it was a movement to identify the critics of the government. गवर्नमेंट के खिलाफ कौन है ये जानने के लिए उसने एक योजना लाई थी, और जल्दी उसको पता चल गया कि गवर्नमेंट के खिलाफ कौन कौन है. Many liberal newspapers and many liberal leaders and many workers and party members they started criticism of Mao and Communist Party of China. उन्होंने चाइना के अंतर्गत दोनों पे सवाल खड़े किए और माओ पे क्रिटिसाइज करने लगे. माओ से तुंग ने सब चीजों का जायजा लिया और फिर इन लोगों को सबक सिखाने के लिए उसने लाया कल्चरल रेवोल्यूशन या सांस्कृतिक क्रांति. In 1966 he brought cultural revolution. So basically what was it? See the name, Sanskritik Kranti. Culture means he wanted complete change in China. Whatever was the old, that to be broken, that to be destroyed. It might be old thought, old custom, old tradition, old statues, old books, old system. Whatever was the old, that has to be broken, that has to be destroyed. That was the exact goal of cultural revolution. जो पुराना है उसको सबको मार देना है. उसके पीछे बहुत कारण थे. पहले कारण तो ये था कि माओ की सब स्कीम फेल हो गई, जैसे हमने देखा. कम्युनिस्ट फेल्ड, greatly forward failed, agricultural production failed because of the crazy idea of Mao's. He was of opinion that
sparrow would destroy the crop, so he ordered to kill all the sparrows. Because of the killing of sparrow, the number of insects increased and it completely shattered the crops in China. चाइना में उसने बहुत सी चिड़िया को मारने का आदेश दिया। चिड़िया मर जाने से और कीड़े मकोड़े बढ़ गए और पूरे चाइना का क्रॉप खत्म हो गया। चाइना में ड्रॉट आ गया। Ultimately 2 crore people died in this drought. So somehow he wanted to divert the attention of the people. ये भी एक कारण था. So now he failed in economics, he failed in agriculture, he failed in industrialization. So he turned his attention to the cultural revolution. So he had given a new slogan: let us bring new culture to China. So it was basically against the critics of Mao in the Communist Party of China. China की Communist Party में जो उसकी critics थे, उनको silence करने के लिए, the liberal elements in the government, he started cultural revolution. So basically Mao stood for demolition of all old things, जैसे old thoughts, old customs, old traditions, old statues, old system of education, and all the existing workers or government employees such as the teachers, professors, the movement was against them. माओ ने सांस्कृतिक क्रांति के नाम पे एक ऐसा संगठन खड़ा किया स्टूडेंट का, उनको बताया कि चाइना में जो जो ओल्ड है उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो क्या ओल्ड थॉट्स, वो पुराने ख्यालात, पुराने स्टैच्यू, पुराने लाइब्रेरी, पुराने बुक्स, पुराने टीचर, जो भी ओल्ड है उसको हमें डिस्ट्रॉय करना है। एंड ही गॉट टैसिट सपोर्ट ऑफ रेड गार्ड्स। उसने एक संगठन तैयार किया रेड गार्ड नाम का। इन दैट रेड गार्ड ही अपॉइंटेड children or drop out from school and colleges. So this red guards became a parallel government. जैसे कि चाइनीज गवर्नमेंट का पुलिस था, आर्मी था, एक नया बन गया रेड गार्ड, एंड रेड गार्ड्स listened to the Mao's orders. So these red guards created havoc in China. उन्होंने पूरे चाइना में अफरा तफरी मचा दी. They beat the teachers. They set school libraries on fire. They stripped some of the teachers. They captured the party members who went against Mao. जो भी माओ के खिलाफ बोलता था उनको पकड़ा गया, उनको मारा गया. जो टीचर्स लिबरल थे उनको पकड़ा गया, उनकी परवट निकाली गई. And Mao instigated students to beat teachers and to go against parents because he wanted to change the China forever. अगर हमें नया समझ करना है तो पुराना समझ को तोड़ना होगा. इस तरह से उन्होंने सीख दी और बच्चों को बहकाया कि टीचर को डिसोबे करो, टीचर को उनकी डिसिप्लिन की ऑर्डर को मत मानो, पेरेंट्स की मत सुनो, उनके खिलाफ जाओ. And so the teachers were beaten up by the children, the parents were disobeyed by the children, and lawlessness prevailed in China. पूरे चाइना में अफरा तफरी मच गई, पूरा lawlessness हो गया. In this way, जो old libraries थी उनको fire लगा दिया गया. जो old statues थे, historical monuments, artifacts थे, उसको जलाया गया. And entire China's growth stopped because of this cultural revolution. पहले तो great leap forward unsuccessful हुई, बाद में commune unsuccessful हुआ. Then this cultural revolution completely shattered the Chinese progress and Chinese stability, Chinese economic stability and Chinese financial growth. At the same time, Soviet Union was also not happy with China's model of working. Soviet Union was a great friend of China. Soviet Union sent technicians, doctors, engineers to help the China. लेकिन चाइना ने इस तरह के काम करने के बाद सोवियत यूनियन ने सब टेक्नीशियन को फिर से रशिया में बुला लिया. Then also China did not stop, and under the Mao Zedong this kind of policies continued. So ये उसको है ये था सांस्कृतिक क्रांति के बारे में. So all the critics of Mao, like Deng Xiaoping, Lin Biao, they were greatly troubled by Mao Zedong. But after the end of this cultural revolution, a new leadership emerged, and the great leader was Deng Xiaoping or Deng Xiaoping.
This person was a pragmatic. Unlike Mao, he had a love for stability. Unlike Mao, he had love for construction rather than destruction. Unlike Mao, he want development. Mao के exactly उल्टा फिलोसफी थी डेंग शॉपिंग की. डेंग शॉपिंग को इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए थी, स्टेबिलिटी चाहिए थी, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए था. So Deng Xiaoping welcomed America's economic investment in China. Deng Xiaoping took a U-turn in his policy. उसने अमेरिका से दोस्ती बना ली और अमेरिकन कंपनी को न्योता दिया. तब से 1975 से अमेरिकन कंपनीज चाइना में है. जितनी भी कंपनियां हैं अमेरिका की, डेल, कोका कोला, कोई भी हो, वो सब चाइना में प्रोडक्शन करती है. Because of this Deng Xiaoping. Deng Xiaoping had brought a concept of SEZ, SEZ. SEZ means Special Economic Zone. In Special Economic Zone, government provides electricity, water, either at a cheaper rate or free of cost to industries. So industrialization increase and it gives job opportunity to the people. So basically, Deng Xiaoping was a mastermind in this SEZ, SEZ. SEZ जो concept है Special Economic Zone, वो Deng Xiaoping का है. Shanghai became the headquarter of Z, and ultimately other centers in China also began to be developed, and China became investing hub of America. So America ही China थोड़ा prosperity की ओर बढ़ गया. Unlike Mao, who wanted destruction, who wanted war, who wanted to play with people's lives, Deng Xiaoping was a pragmatic person. उनकी पॉलिसी बहुत ही स्टेबल थी और चाइना अभी उन्हीं के राह पे चल रहा है डेंग शॉपिंग की. Then as far as foreign policy is concerned, China had only one friend, that was the Soviet Union, until 1979. Because China was communist, Soviet Union was communist. But after 1979, when Deng Xiaoping accepted America's investment, America also became friend of China. And to China against established great friendship with Pakistan only to neutralize India's influence in Asia. इंडिया की इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती की है. So basically, China's foreign policy was aggressive right from the beginning. 1949, China helped North Korea against USA war. Because of China, North Korea became independent. North Korea was easily captured by South Korea. North Korea को South Korea ने capture कर लिया था because of the help of America. But in 1949, China helped North Korea to achieve its independence. China had always been following very aggressive policy against its neighbor. Whether it was India, whether it was Vietnam, whether it was North Korea, China हमेशा से aggressive रहा है. But after Deng Xiaoping, China had given more attention to the economic development rather than the political development. Deng Xiaoping आने के बाद उन्होंने economic development पे ज़्यादा ध्यान दिया. Then second model is about Japan. We all know that Japan is Asia's most developed country. In fact, Japanese economy is the second largest economy in the world after America. अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान है. And Japan is a very tiny country, very small country in comparison with the bigger countries. बहुत ही छोटा देश. There are 4 islands: Honshu, Hokkaido, Kyushu, Kyushu, 4 islands. And Japan was devastated in 1945 when America dropped 2 atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. So 1945 में 2 एटॉमिक बॉम्ब गिरने के बावजूद 1960 में 15 साल में जापान दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बना आफ्टर अमेरिका. 15 साल में बॉम्ब गिरने के बावजूद जापान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, इसलिए उसको आर्थिक चमत्कार कहा गया है. इट वाज नॉट अ मिरेकल, इट वाज नॉट अ चमत्कार. कोई चमत्कार नहीं था, उसके पीछे कुछ कारण थे. जापानीज हार्ड वर्क था. So we have to understand the process of SCAP, which initiated in 1945. जापान पे 2 एटॉमिक बॉम्ब डालने के बाद अमेरिका ने वहां एक स्कैप नाम की योजना कार्यान्वित की.
जिसका हेड था मैकार्थर, जो कमांडर इन चीफ था अमेरिका का. So MacArthur have chief objectives and aims. America had destroyed Japan, so it was a moral responsibility of America to bring development of Japan. अमेरिका ने बॉम्ब डाले थे, इसलिए अमेरिका को ऐसा लगा कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जापान की थोड़ी डेवलपमेंट करे. इस तरह से उसने मैकार्थर को अधिकार दिए स्कैप के अंडर. So MacArthur brought systematic planning in Japan. First of all, he brought demilitarization. He had hanged those officers responsible for the Second World War, and he minimized the militarism among the people. He changed the textbooks which influenced violence, which supported violence. He brought new democratic value-based syllabus. जो सिलेबस पढ़ के बच्चों के माइंड में डेमोक्रेसी आ जाए या they become democratic. Then he brought democracy in Japan. Parliamentary democracy was brought. Then he brought new education system. He had given tremendous impetus for the small scale industries and new business groups to bring economic development. He solved the issues of workers. So initially MacArthur worked for 6 years, 1945 to 1951. MacArthur was recalled in 1951. फिर जापान ने 51 से 60 में 9 साल में इतनी प्रगति की कि जापान दुनिया का नंबर 1 देश बन गया, नंबर 2 देश बन गया. उसके क्या कारण थे हम देखेंगे. Basically, Japan was developed country before the dropping of atomic weapons on Japan. जापान पे एटॉमिक बम गिरने से पहले जापान एशिया का सबसे डेवलप कंट्री था. Because Japan was not colony of any other country. India was a colony, Thailand was a colony, सब colony थे. Japan was not a colony. Japan was an independent nation. And Japan had sent its student to America, to England for further education. Japan had good universities, good education system, and industrialization. So Japan just needed a little help. It was already developed. They were developed देश था वो पहले से. उसको थोड़ी सी मदद की जरूरत थी जो अमेरिका ने दे दी. Secondly, Japanese people are very disciplined. They are hard worker and they greatly patriotic people. They supported all the moves of the government, and Japan focused on electronic goods which required fundamentals such as iron and coal, which were imported from other countries, and Japan converted this iron and coal into finished goods, into electronic gadgets. So margin of profit is very high in these consumer goods. That is one of the basic reasons. Japan had no fertile land. Japan had no deposit of iron. Japan had no deposit of coal. जापान के पास जमीन नहीं है, आयरन नहीं है, कोल नहीं है, कुछ भी नहीं है. But Japan has a technology, and due to the technology, Japan converted this raw material imported from other countries into finished goods. So कहीं से कोयला लिया, कहीं से आयरन लिया और उसका finished goods में conversion किया. इस तरह से because of this kind of new technology or use of new technology, Japan became advanced nation in the world. Japanese textile, Japanese electronic gadgets, Japanese car, Japanese television, Japanese electronic goods became famous worldwide. And all the Japanese companies like Sony, Mitsubishi, they became a great success in the world. इस तरह से जापान का डेवलपमेंट होने की वजह यही है, हार्ड वर्किंग ऑफ द पीपल, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड नॉवेल्टी इन एजुकेशन. Novelty in education and hard-working nature of Japanese people, and because of that, Japan became second largest economy. So people often call it आर्थिक चमत्कार, economic miracle. It was not a चमत्कार, कोई चमत्कार नहीं है, systematic development है. कम साल में हुई इसलिए लोग उसको चमत्कार कहते हैं. Basically, it was a development that took place because of hard work of Japan and helped by America. Then in third module, we begin with Cold War in Vietnam.
We all know that Asia is the biggest continent, and in Southeast Asia, Vietnam was a country which was known as Indo-French region earlier. Communism became successful in Russia, in China, so America upheld that it should not spread to other countries. दूसरे देशों में कम्युनिज्म नहीं जाना चाहिए, इसलिए अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया. वियतनाम नाम का देश है, इसके दो भाग बन गए थे. नॉर्थ वियतनाम सपोर्टेड कम्युनिस्ट, साउथ वियतनाम सपोर्टेड कैपिटलिस्ट. नॉर्थ वियतनाम वाज अ फ्रेंड ऑफ रशिया, साउथ वियतनाम वाज अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका. So Russia wanted to convert all Vietnam into communism, and South Vietnam wanted to convert all Vietnam into capitalistic bloc. Cold War जो हमने पहला 5th सेम में पढ़ा, this is an extension of Cold War. वियतनाम के दो भाग थे, एक भाग को रशिया का सपोर्ट था, एक भाग को अमेरिका का सपोर्ट था. And because of that, war took place in 1954 and lasted up to 1975. For 20 years, war continued, and Vietnam was bombed by America. A lot of bombs were dropped on it. North Vietnam had a communist ideology supported by Ho Chi Minh. See, in the picture we can see this is North Vietnam, red, and green is South Vietnam. So North Vietnam has support of China and Russia, and South Vietnam has support of America. So America wanted to capture, to make entire Vietnam as a capitalistic democratic. And Russia wanted to make all Vietnam as a communist. रशिया को सबको कम्युनिस्ट बनाना था, अमेरिका को सबको कैपिटलिस्ट बनाना था, इसलिए वॉर 20 साल चला. In this war, many people died. Lot of people lost their lives. And basically, South Vietnamese were defeated by North Vietnam because of great leadership of Ho Chi Minh. America lost its more than 4 lakh soldiers in Vietnam. America ने बहुत से सोल्जर यहाँ भेजे, एटॉमिक नॉर्मल बॉम्ब्स डाल दिए लोगों पे. सिविलियंस वर किल्ड बाय अमेरिका, लैक्स ऑफ सिविलियंस वर किल्ड. सो अमेरिका ने इतने एट्रोसिटी की इस वॉर में कि इतने एट्रोसिटी दुनिया में शायद किसी देश ने नहीं की होगी. लोगों पे जबरदस्त अत्याचार किए, लेकिन फिर भी लोगों ने अमेरिका को हराया और नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम एक हो गया, एंड दैट बिकेम कम्युनिस्ट, एंड हो ची मिन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम. इस तरह से 5th सेम में हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया था. इस तरह से 6th सेम में वियतनाम है. Vietnam became the victim of Cold War politics, the Cold War between America and Russia. So it became victim. It lost its lives of its citizens, yet it successfully defended its nation. It successfully defeated America. अमेरिका को इसने हराया और दिखा दिया लोगों को कि देश के प्रति प्यार और लगन हो तो अमेरिका हो या और कोई देश हो उसको हराया जा सकता. Second country, Indonesia. You know, Indonesia is a country which was basically a Dutch colony. A people of Netherlands or Holland, they are known as a Dutch. It was a Dutch colony. And in 1945, Indonesia got freedom. So Dr. Sukarno became the chief promoter of Indonesian nationalism. As India was led by Pandit Nehru, Indonesia was led by Dr. Sukarno. And Sukarno was a great socialist, and he initiated a new system in Indonesia, that is guided democracy. Sukarno believed that democracy is good, but it must be guided. And who will to guide? Sukarno. He had less belief in people. He thought that people cannot be completely responsible for the democracy. Democracy need a guidance of certain expert, and Sukarno became that expert. So he brought democracy. In fact, he brought his own cult, his own regime, and had given a name guided democracy. Because in guided democracy, there was no other political party. Only political party was that of Sukarno. दूसरी की political party थी ही नहीं. सुकार्नो कोई पार्टी थी, तो फिर वो वही जीतने वाले थे. At the same time, he brought two things together: socialism, communism, and nationalism.
तीनों चीजों का उसने मिलाप किया तो इंडोनेशिया को आगे लेके गए. However, he was toppled by the government and General Suharto became a chief of Indonesia. Then in the same chapter, we have to study ASEAN. We all know about NATO, SEATO, CENTO in 5th semester, that America was responsible for such kind of organization, NATO, SEATO, CENTO, and Marshall Plan, which they started to give help to the friend countries and to develop the trade and commerce relations of all the countries. अपने दोस्तों के साथ निजी संबंध बढ़ा के देशों का फायदा होना चाहिए, इसलिए अमेरिका ने अलग अलग करार किए थे, जैसे कि नाटो था, सीएटो था, सेंटो था. तो एशियन कंट्रीज के लोगों ने सोचा कि हम भी ऐसा एक पैक्ट साइन करेंगे. सो 1967 एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, they started this pact in Bangkok, the capital of Thailand, and had given it name as ASEAN. So ASEAN basically was an organization, was a political, social, and economic organization, which was basically came into existence to solve the problems by peaceful negotiation and to achieve prosperity, economic prosperity by trade and commerce. सब आशियाई देशों का एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रहे, उनके एक दूसरे के साथ भागीदारी बने और उनके आपस के झगड़े सुलझ जाए, इसलिए आसियान का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था बेसिकली. सो यही उसके उद्देश्य थे कि डेवलपमेंट का स्पीड बढ़ाना एंड ऑल दी प्रॉब्लम शुड बी टैकल्ड इनटू पीसफुल मीन, शांततामय मार्ग से झगड़े सॉल्व करना, एंड जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ टू बी फॉलोड, उसको फॉलो करना. इस तरह से साउथ ईस्ट एशिया में शांति बनाए रखना, ये उसका उद्देश्य था. साउथ ईस्ट एशिया में शांति बनाए रखना आसियान का. एंड फोर्थ चैप्टर बिगिंस विद अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट. यू नो दैट दिस इज वेरी complicated topic, but if you study all the events carefully and learn the background of this problem, it is very easy. You may have heard about the conflict between Israel and other Muslim nations in WhatsApp group or in news channels, but you better study the book and just have a look at the root cause of this problem. इन दोनों के संघर्ष का कारण एक बार पता करो तो आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा. बेसिकली इजराइल वाज अ कंट्री ऑफ जू पीपल एंड जू डिडंट हैव देयर होमलैंड. जू नाम का एक धर्म है जिसको यहूदी भी कहा जाता है. यहूदी लोग थे जो कुछ इंग्लैंड में थे, कुछ फ्रांस में थे, कुछ रशिया में थे, कुछ पोलैंड में थे, कुछ स्पेन में थे. इन ईच एंड एवरी कंट्री जू स्कैटर्ड फ्रॉम एशियन टाइम्स. They had their own language. They had their own faith. They accepted the dictates of Moses. जैसे इस्लाम के लिए पैगंबर है, क्रिश्चियनिटी के लिए जीसस है, उनके लिए मोसेस है. So they kept their identity intact in all the nations. Even if they lived in Russia, in America, in England, in France, they kept their identity intact as a Jew. So, but they had no their own nation. So in 20th century, they wanted a nation. They wanted their own country. And fortunately, many Jews were very rich in America. They were bankers. They were industrialists. They had enough money. So they started buying land in Palestine. जिन्होंने अभी फिलिस्तीन नाम का देश है पैलेस्टाइन, जो उसके लैंड को खरीदना स्टार्ट किया. And slowly and steadily in 40-50 years they captured most of the part of Palestine. उन्होंने बहुत सी जगह खरीद ली क्योंकि वहां के जो अरब मुस्लिम थे वो पुअर थे, उन्होंने लैंड बेच दी, उन्होंने खरीद ली. And then in 1948 England declared a creation of new country for Jews. In 1948 में उन्होंने डिक्लेयर किया अभी ये देश जो लोगों का हो गया, आधा देश जू का, आधा देश अरब. So basically Muslim country, Muslim people are living there, and one day America and England created Jew nation,
So it was a great shock to Muslim people, Arab people. So this is the beginning of war between Arab and Jews. Basically ये उसकी वजह है कि जगह अरब लोगों की है, जो लोग बाहर से आ गए थे उन्होंने खरीद ली जमीन, बाद में इंग्लैंड और अमेरिका ने उनको देश एक स्वतंत्र देश के लिए मान्यता देगी ये दिन. You can see in the map, you better see this map. You will find this is the first map. See, you will see the process. This was Israel and this green was a Palestine. And you can see the area of Palestine is shrinking. जो ग्रीन लैंड है पैलेस्टाइन मुस्लिम लोगों की वो कम कम होती जा रही है और जो लोगों की बढ़ रही है. Jew people, they started their sphere of influence in this peninsula, and they were opposed by all the Muslims, and this was the beginning of Jew-Arab wars. And in that war, Jews became successful because they had tacit understanding and tacit support of America and England. Arabs were defeated because they are not modern in warfare, they are backward in economic condition. Jews are very advanced, they had a good support, and they had better supply of arms ammunition from England and America. इंग्लैंड अमेरिका से भी उनको मदद मिलती है जो लोग. इस तरह से उन्होंने सब देशों को हराया और अपना एक independent nation established. The next part is the revolution of Iran in 1979. We all know that Iran was a very powerful country in medieval time, but around 19th century it was under the control of England, and England had established oil companies in Iran, and all the oil productions were utilized by England. So because of that, people of Iran were unhappy with England and unhappy with its kings Reza Shah Pahlavi. Reza Shah Pahlavi के खिलाफ लोग थे क्योंकि ईरान में जो भी कंपनी तेल की वो सब पैसा इंग्लैंड में जाता था. उनको ऐसा लगता था पैसा ईरान में रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने उनके माइंड में असंतोष था. And this discontent was used by Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini नाम का एक कर्मठ मुस्लिम नेता था. उसने he capitalized on the fears of people and he exploited the emotions of the people. लोगों के इमोशन का फायदा लेके उसने क्या किया, ईरान पे कब्जा किया. And he declared Iran as Islamic. Earlier Iran was a secular democratic like India. Before 1979, Iran was a secular and democratic like India, but after 1979, Iran became Muslim nation because of Ayatollah Khomeini. And Ayatollah Khomeini declared all Iran as a Muslim country, and he established Muslim fundamental laws, and henceforth Iran lost its democratic values and Western influence. And the last important topic in this was OPEC. We all know that oil producing countries had advantage in this modern days, as all the important equipments and all the important means of transportation, they are run on petrol and diesel. And so all the oil producing countries like Libya, Nigeria, Saudi Arabia, Ecuador, Iran, they had organized themselves into a stable group that was known as OPEC. OPEC नाम का उन्हें ग्रुप बना, and this OPEC decides the prices of oil. The prices of oil वही डिक्लेयर करती है. इस तरह से ऑयल प्राइस पे कंट्रोल रखने के लिए OPEC नाम का संगठन एस्टेब्लिश हुआ, जो खास करके ऑयल पे कंट्रोल रखने के लिए है. ऑयल प्राइस का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, इस पे कंट्रोल करता है और उसकी प्राइस भी फिक्स करता है. इस तरह से whatever we studied in 5th semester, that was about contemporary world, and in 6th semester we are going to study contemporary world, but the countries only in Asia. In fifth semester we have studied contemporary
America, Australia, and this in 6th semester we have studied this Asian contemporary countries. 5th sem में हमने यूरोपियन कंट्रीज देखी थी, 6th sem में हम एशियन कंट्रीज देख रहे हैं. So अभी इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. So I will explain that point which is quite difficult to understand. और आपको अगर कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो सर, या कोई पॉइंट उसमें रह गया है या कोई डिफिकल्ट है तो उसके बारे में फिर से बताओ. यस सर, यस सर, यस सर. सर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त, खूप सुंदर, अप्रतिम असं मी म्हणू शकतो की एका तासामध्ये चीनचा सॉरी आशियाचा इतिहास मुलांसमोर सांगणं किंवा प्रेझेंट करणं खरंच खूप जिकरीचं काम असतं. कारण अपन पाहतो, अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये बहुत वास्ट है, एशिया का सिलेबस जो है ना बहुत वास्ट है और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आज का सेशन. और उनको सच में उनको इतनी अच्छी तरीके से आपने बताया है. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि बच्चों के कुछ क्वेश्चंस आए तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा पहला टॉपिक है, जो फर्स्ट मॉड्यूल है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं और कैसे हम लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं. तो हर एक उनका यही क्वेश्चंस है, वो पूछ रहे हैं कि हर एक मॉड्यूल पे, हर एक यूनिट पे हम लोग कैसे तैयारी करें, कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करें और ऑनलाइन के हिसाब से हमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो अगर आप ऐसे बता सकते हो कि मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4 पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे हम लोग उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं. यस सर. अगर एग्जाम ऑफलाइन है तो उसमें देखो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड कल्चर रेवोल्यूशन. ग्रेट लीप फॉरवर्ड सर हिंदी आणि मराठी थोडस, कारण मराठी मीडियमचे बरेच विद्यार्थी आहेत. ठीक आहे, ठीक आहे. तर जर तुम्हाला असं ऑफलाईन एक्झाम असेल तर त्यामध्ये एक लक्षात ठेवा, चीनचे अंतर्गत धोरण असा प्रश्न आला तर तुम्हाला ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कम्युन या गोष्टी लिहायच्या. ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कम्युन, हनुमान उडी म्हणतात ना मराठीत त्याला, हनुमान उडी, आणि कम्युन हे सगळं लिहायचं अंतर्गत धोरणामध्ये. हे महत्वाचं आहे इंटरनल मध्ये. आणि डेंग शॉपिंग च्या अंतर्गत चीनमध्ये जी आर्थिक प्रगती झाली, ज्यामध्ये ओपन मार्केट इकॉनॉमी कॉन्सेप्ट आहे, सेज स्पेशल इकॉनॉमिक झोन, ओपन मार्केट इकॉनॉमी, हा कॉन्सेप्टच त्यांनी आणलाय की एखाद्या जागेवर इंडस्ट्रीजना पाणी, इलेक्ट्रिसिटी सगळं स्वस्तात द्यायचं, मजूर स्वस्तात द्यायचे आणि तो भाग त्यांना देऊन टाकायचा की त्यांना स्वस्त प्रोडक्शन स्वस्त झालं पाहिजे. हा जो ओपन मार्केट इकॉनॉमी कॉन्सेप्ट आहे, हा या आर्थिक प्रगती महत्वाचा भाग आहे डेंग शॉपिंगचा. याच्यावर प्रश्न हा असा येऊ शकतो. आणि परराष्ट्र धोरण चीनचं त्यामध्ये पॉइंट आहेत. मग रशिया सोबतचं परराष्ट्र धोरण आहे, अमेरिकेसोबतचं आहे, भारतासोबतचं आहे. आणि जर ऑनलाईन एक्झाम असेल MCQ मध्ये, मग तो तुम्हाला लाईन टू लाईन रिडिंग केलं पाहिजे, कारण कुठला क्वेश्चन कसं आहे ते सांगता येत नाही, आहे ना. लाईन टू लाईन रिडिंग करावं लागेल. पण बेसिकली अभाग जो आहे की माओत्से तुमच्या अंतर्गत चीनचे धोरण स्पष्ट करा, किंवा चीनचं समाजवादी धोरण स्पष्ट करा, किंवा चीनची अंतर्गत धोरण स्पष्ट करा, किंवा ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एकच पॉइंट येतो, फक्त नाव वेगळे असतं. ग्रेट लीप फॉरवर्ड स्पष्ट करा, कम्युन स्पष्ट करा, तो सगळं एकच भाग आहे अंतर्गत धोरणामध्ये. सगळा एकच भाग आहे, फक्त नाव बदललेलं असेल, बाकी एकच भाग आहे. फक्त त्यामध्ये सांस्कृतिक क्रांती वेगळा भाग आहे, ज्याची कारण वेगळे, परिणाम वेगळे, तो एक भाग आहे. अशा तऱ्हेने तुम्हाला फर्स्ट मॉड्यूल हा थोडा फास्ट आहे, खूप सगळ्यात मोठा फास्ट मॉड्यूल हा फर्स्ट, कारण याच्या अ मध्येच बघा किती भाग आहे. ग्रेट लीप फॉरवर्ड आहे, कम्युन आहे, सांस्कृतिक क्रांती आहे, हे सगळे भाग या अ मध्येच आहे. त्यामुळे हा प्रकरण एक थोडं मोठा आहे इतर प्रकरणापेक्षा, पण याच्यामध्ये तुम्ही सोडू काहीच शकत नाही, कारण एक सोडलं तर दुसरं समाधान. इंटरलिंक्ड आहेत ते. ग्रेट लीप फॉरवर्डशी कम्युन लिंक्ड आहे, कम्युन सोबत क्रांती लिंक, हे सगळे पॉइंट लिंक्ड आहेत. त्याच्यामुळे किती फास्ट असला तरी अ पॉइंट मधला तुम्ही अ ब करा, ब क करा किंवा अ क करा, परंतु तुम्हाला ते कम्प्लीट केलं पाहिजे. कम्प्लीटच केला पाहिजे, कम्प्लीट केला पाहिजे, कारण तो इंटरलिंक्ड आहे.
अतले 2 पॉईंट करतो, बतले 2 पॉईंट करतो, तसं नाही, अकम्प्लीट. कारण ते एकमेकाशी लिंक्ड आहेत. तुम्हाला अंतर्गत धोरण समजलं तर ग्रेट कमी समजेल, कमी समजलं तर ग्रेटली फॉर्ड समजेल, ग्रेटली फॉर्ड समजलं तर सांस्कृतिक क्रांती समजेल. म्हणून अपूर्ण ब पूर्ण असं करावं लागेल, कम्प्लीट सब मॉड्यूल करावं लागेल पहिल्या. व्हेरी गुड. आणखी हा सेकंड आणखी सर प्रत्येक मॉड्यूल म्हणजे जसं आता जपानची पुनर्रचना, तर जपानच्या पुनर्रचनेमध्ये काय इम्पॉर्टंट असणार आहे आणि कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात? जपानच्या पुनर्रचनेमध्ये बघा प्रश्न कसा येऊ, जसं जपानची पुनर्रचना स्पष्ट करा किंवा जनरल डगलस मॅकआर्थरचं योगदान स्पष्ट करा किंवा अमेरिकेने कशा प्रकारे जपानवर अधिकार शासन गाजवले ते स्पष्ट करा किंवा जपानची घडी कशा प्रकारे बसवली ते स्पष्ट करा. काही विचारलं तरी तुम्हाला स्कॅप कोर्स लिहायचंय, जनरल डगलस मॅकआर्थर स्कॅपचे एम्स, ऑब्जेक्टिव्ह आणि प्रणाली काय काम केलं बस. मग तो प्रश्न जपानच्या अधिकार शासनाचा असो, जनरल डगलस मॅकआर्थरचा असो किंवा जपानची घडी कशी बसली तो असा कसंही विचारला तरी तुम्हाला 100% मॅकआर्थर लिहायचं आहे, स्कॅपचे एम्स लिहायचेच आहेत, ऑब्जेक्टिव्ह लिहायचेच आहेत. प्रश्न कसा विचारला तुम्हाला हे पॉइंट फिक्स आहेत, त्याचे स्कॅपचे पॉइंट फिक्स आहेत. प्रश्न कसा येऊ द्या, तुम्हाला 1 मिनिट पॉइंट दाखवतो आहे बघा, फिक्स आहे. महायुद्धात पराभव, मॅकआर्थरची नेमणूक ही त्याचं काम, निरलष्करीकरण, लोकशाही वाढवणे, शिक्षण सुधारणा, हे फिक्स आहे. मग तो प्रश्न अमेरिकेवर येऊ, जपानवर येऊ की मॅकआर्थरवर येऊ, कसाही बदलो, पण तुम्हाला हेच पॉइंट लिहायचे, पॉइंट हेच येणार स्कॅपचे. एखाद्या वेळेस प्रश्नामध्ये स्कॅपचा उल्लेख असेल, एखाद्या वेळेस नसेल देखील, मग फक्त मॅकआर्थरचा उल्लेख असेल, स्कॅपचा असेल किंवा जपानचा असेल तर तुम्हाला लिहायचे तेच पॉइंट. येस सर. आणि सर आपण जो 3rd मॉड्यूल आहे त्याच्यामध्ये दक्षिण पूर्व आशिया, तर त्याच्यामध्ये शीतयुद्ध आणि व्हिएतनाम आणि अमेरिका असं त्याच्याशी रिलेटेड कशा प्रकारचे प्रश्न असू शकतात? इथे एक प्रश्न असा येईल, व्हिएतनाम शीतयुद्धाचा बळी कसा पडला ते स्पष्ट करा. किंवा व्हिएतनाम हे शीतयुद्ध, म्हणजे इंग्लिश मध्ये प्रश्न येतो, हाऊ कोल्ड वॉर बिकेम हॉट वॉर इन व्हिएतनाम, म्हणजे शीतयुद्धाची परिणती भयंकर युद्धात कशी झाली, किंवा व्हिएतनाम युद्धाचे कारणे आणि परिणाम, किंवा व्हिएतनाम युद्धामध्ये अमेरिकेचा हस्तक्षेप. एकच प्रश्न, एकच उत्तर वेगवेगळ्या प्रकारे विचारलं जाऊ शकतं, उत्तर तेच येणार तुमचं व्हिएतनामचं. किंवा हो ची मिन यांनी व्हिएतनामला कशा प्रकारे मार्गदर्शन केले, एकच कंटेंट तेच राहणार, फक्त प्रश्न वेगळ्या अँगलने विचारणार तुम्हाला. आणि जो आपला 3rd मॉड्यूल मधला जो ब आहे त्याच्यामध्ये इंडोनेशिया आणि सुकार्नो असा प्रश्न विचारण्याची शक्यता असू शकते. त्याच्यामध्ये कसं आहे, त्याच्यामध्ये असे प्रश्न विचारते तुम्हाला की इंडोनेशियाच्या आधुनिकीकरणात डॉक्टर सुकार्नो यांची भूमिका स्पष्ट करा. इव्हॅल्युएट द रोल ऑफ डॉक्टर सुकार्नो इन मॉडर्नायझिंग इंडोनेशिया. किंवा हाच प्रश्न बघा कसा, व्हॉट इज द रोल ऑफ गायडेड डेमोक्रेसी ऑफ सुकार्नो. सुकार्नो म्हटलं की गायडेड डेमोक्रेसी आलीच, गायडेड डेमोक्रेसी म्हटलं की सुकार्नो आलाच, मग त्याचं नाव येऊ का नाही येऊ, ते दे आर इंटरलिंक्ड. ओके व्हेरी गुड. आणि आसियान जो आहे, जी आशियन जी संघटना आहे त्याच्या संदर्भात आपण काय सांगू शकाल? आशियान हा थोडा टॉपिक सगळ्यांसाठी नवीन आहे, याच्यावर जास्त मटेरियल देखील अवेलेबल नाहीये तसं. मग आपण हे 2 अ आणि ब जर पक्के केले तर मग आशियान नाही केलं तरी चालेल, पण हे पक्के पाहिजे. असं आशियान थोडं मटेरियल कमी आहे. मग मॉड्यूल नंबर 4 जो आहे पश्चिम आशियातील संघर्ष, तर त्या पश्चिम आशियातील संघर्ष आपण जेव्हा चर्चा करतो तेव्हा अरब आणि इस्रायल हा जो संघर्ष आहे हा प्रश्न थोडासा सेन्सिटिव्ह, आणि मला असं वाटतं की नेहमीच त्याच्यावरती काही ना काहीतरी प्रश्न आपल्याला विचारले जातातच. तर आपल्याला ह्या विद्यार्थ्यांना काय सांगता येईल की कशा प्रकारे अरब इस्रायल संघर्ष आला, तर त्याचं कसं आपण तो सोडवला पाहिजे किंवा त्याच्यावरती कशा प्रकारचे पॉइंट्स आपण काढले पाहिजेत?
काय सांगाल तसा तुम्ही हा विद्यार्थ्यांना? प्रकरण पहिल्यातला अ मोठा आहे, तसं पण अ मोठा आहे. तर याच्यामध्ये काय येईल पहिले सगळ्यात महत्वाचं, एक्सप्लेन द कॉजेस अँड कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ वॉर. अरब इस्रायल संघर्षाचं मूळ काय, त्याचं कारण काय, त्याचा परिणाम काय, हा एक मोघम प्रश्न आहे. याच्यामध्ये सगळं थोडं थोडं येऊन जाईल. ओके, कॉजेस कॉन्सिक्वेन्सेस. दुसरा असा येईल, एक्सप्लेन द वॉर ऑफ 1948. फक्त 1948 बद्दलच येईल. किंवा तिसरा असा येईल, एक्सप्लेन द वॉर ऑफ योम किप्पूर. योम किप्पूरचं युद्ध आहे आणि 6 डे वॉर, या दोघांना स्पेशल क्वेश्चन येऊ शकतो. एक्सप्लेन द वॉर ऑफ योम किप्पूर अँड 6 डे वॉर ऑफ 1967. 67 6 दिवस चाललेलं युद्ध आणि योम किप्पूरचं वॉर, या दोघांवर स्पेशल येऊ शकतो. 48 वर स्पेशल येऊ शकतो. आणि सगळ्यांवर असं एक जनरल येईल. मग कॉजेस कॉन्सिक्वेन्सेस येऊ, 3-4 टाईपचे प्रश्न येऊ शकतात यावर. याच्यामध्ये आणखीन जे 2 प्रश्न जे आहेत ब आणि क, ते पण फार इम्पॉर्टंट आहेत. कारण ब जो आहे तो आपण पाहतोय खाली इकडे बघा, याचं एक सिंपल आहे. नाही, फोर्थ मॉड्यूल हा, इराणची क्रांती. 1979च्या इराणी क्रांतीची कारणे आणि परिणाम, हा एक प्रश्न येऊ शकतो. कॉजेस कॉन्सिक्वेन्सेस पहिला. दुसरा, व्हॉट इज द रोल प्लेड बाय आयतुल्ला खोमेनी इन 1979 रेव्होल्युशन ऑफ इराण. कॉजेस कॉन्सिक्वेन्सेस येऊ शकतो. आयतुल्ला खोमेनीची भूमिका काय, हा पण येऊ शकतो. पण आयतुल्ला खोमेनीची भूमिका स्पष्ट करताना पण कॉजेस कॉन्सिक्वेन्सेस लिहायचेच, फक्त आयतुल्ला खोमेनीवर थोडा जास्त भर द्यायचा. ओके. तसंच कॉजेस कॉन्सिक्वेन्स मध्ये आयतुल्ला खोमेनीचा भर थोडा कमी द्यायचा, इकडे फक्त त्याचं थोडं वाढवायचं आयतुल्ला खोमेनीचं. बाकी कॉजेस तर बदलणार नाही, कॉन्सिक्वेन्स बदलणार नाही, ती तशीच राहणार. फक्त जेव्हा आयतुल्ला खोमेनीचं स्पेशल नाव येईल तेव्हा त्याच्याबद्दल थोडं 10 कोटी जास्त लिहायचं. एक्सलंट. आणि सर शेवटचा आता जो प्रश्न आहे की ओपेक है ना, तेलाचं राजकारण, आता इव्हन 21व्या शतकामध्ये आजच्या या घडीला तेलाचं राजकारण फार महत्वाचं हा टॉपिक आहे. आणि मग आजच्या या घडीला 21व्या शतकामध्ये किंवा आज आपण 2022 मध्ये ही घटना कशा प्रकारे पाहतो आहोत, काय सांगाल विद्यार्थ्यांना? मुळात तेलाचं राजकारण तुम्हाला कदाचित काही मुलांना माहित असेल नसेल, अ आणि ब याचा संबंध उपेक्षी आहे, तेलाच्या राजकारणाशी. ज्यू लोकांना देश नव्हता, त्यांना पॅलेस्टाईन देश देण्याची आवश्यकता काय होती? कारण हेच होतं की तेल प्रोड्युसिंग कंट्रीज आहेत गल्फ, त्यांच्या वचक ठेवासाठी, कंट्रोल ठेवण्यासाठी. मुळात तेलाचं राजकारण पहिलं इराणमध्ये क्रांती झाली तेलामुळेच. सद्दाम हुसेनला फाशी देण्यात आली. बघा, अमेरिकेचा गल्फ कंट्रीजवर पूर्णपणे कब्जा आहे. सौदी अरेबिया असो, कुवेत असो, ओमान असो, गल्फ कंट्रीज जेवढ्या अमेरिकेचे खास दोस्त आहेत, अमेरिकेचे खास संबंध आहेत यांच्याशी. आणि जे अमेरिकेला मानत नाही, जसं कर्नल गड्डाफी आहे लिबिया, सद्दाम हुसेन होता इराकचा. आता इराण जे अमेरिकेचं ऐकत नाही, अमेरिका त्या देशांना धुळीस मिळवते, त्यांना वेगवेगळे आरोप करून त्यांच्यावर. तर बेसिकली तेलाचं राजकारणाचा संबंध या अशी पण आहे. अ ब एकमेकात अडकलेले पॉइंट आहेत. खुद्द अमेरिकेकडे तेलाच्यासाठी पुष्कळ आहेत, अमेरिकेला कोणाची तेलाची गरज नाही. पण तेलावर सगळं जग चालतं, मग त्याच्या कंट्रोल ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या खेळी करतात. एखाद्या देशावर सत्ता पलट करणे, एखाद्या देशावर सरकार उलथून लावणे, एखाद्या देशामध्ये हस्तक्षेप करणे. जोपर्यंत तो देश अमेरिकेच्या बाजूला, सौदी अरेबिया देश आहे, कट्टर मुस्लिम देश आहे, अमेरिकेचा खास आहे, कारण का ते सगळं अमेरिकेचं ऐकतात म्हणून ते चांगले आहेत. या उलट काही देश आहेत, इराक सारखे, सद्दाम हुसेन, ज्यांनी लोकांसाठी खूप काही चांगलं काम केलं, पण त्यांना खोटे आरोप करून अमेरिकेने फाशी दिली, कारण तो देश अमेरिकेच्या बाजूने होता, तेल अमेरिकेला देत नव्हता. ते अमेरिकेचं पॉलिटिक्स म्हणजे तेलाचं पॉलिटिक्स. अमेरिका जे करते जगात ते सगळे याच्याशी संबंधित आहे, तेल राजकारण होते. कारण ज्याचं तेलावर वर्चस्व आहे त्याचं जगावर वर्चस्व आहे. आणि म्हणून येन प्रकारे आपलं वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी अमेरिका देशाला हाताशी पकडते, कधी त्यांच्या हल्ला करते, कधी चांगले सण प्रस्थापित करते. आज पण तुम्हाला तेच दिसेल. तेलाचं राजकारण सगळ्यात महत्वाचं. पण याचा तुम्ही अभ्यास करा थोडासा. वेस्ट एशियामध्ये
जिथे जिथे अमेरिकेने सत्ता पालट केला आहे, जसा मोहम्मद मुसादिक इराण मध्ये, सद्दाम हुसेन इराक मध्ये, जिथे जिथे अमेरिकेला अपोज केले कोणी, अमेरिकेने त्या देशाची सत्ता बदल केलेला आहे. मुळात ओपेक असो, तेल असो, सगळं अमेरिकेशी संबंधित गोष्टी आहेत. अमेरिकेचा हस्तक्षेप, ज्याला आपण म्हणतो की अमेरिकेचा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप सगळ्या देशांमध्ये असतो तेलासाठी. एक्सलेंट सर, एक्सलेंट, खूब खूब सुंदर, बहुत ही बढ़िया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सच में सर आपने इतनी अच्छी तरीके से हर एक टॉपिक को आपने बहुत अच्छी तरीके से न्याय दिया है, और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा कि उनको कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे हर एक मॉड्यूल के ऊपर, और उसके कैसे आन्सर लिखना है. जे पण प्रश्न विचारले जातील त्या प्रश्नांची खूप चांगल्या प्रकारे मुलं उत्तरे लिहू शकतात, त्यांची 100% ती खात्री झालेली असेल. मी पुन्हा एकदा आपले खूप खूप आभार मानतो की तुम्ही तुमचा अतिशय महत्त्वाचा वेळ, किमती वेळ तुम्ही आमच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी दिलेला आहे. मी पुन्हा एकदा SST महाविद्यालयातर्फे आपले खूप खूप आभार मानतो. महाविद्यालयाने ही संधी दिली आपल्याला हे क्रॅश कोर्स सिरीज करण्यासाठी. त्यासाठीही महाविद्यालयाचे संस्थापक प्राचार्य डॉक्टर J.C. पुरुषवाणी सर यांना मी खूप खूप धन्यवाद देऊ इच्छितो. IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर भारती पुरुषवाणी, कुलपू पुरुषवाणी मॅडम यांना सुद्धा मी खूप खूप धन्यवाद देऊ इच्छितो की त्यांनी ही संधी उपलब्ध करून दिली आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक चांगलं प्लॅटफॉर्म निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मी आपणा सर्वांचं खूप खूप आभार व्यक्त करतो इतिहास विभागातर्फे आणि आर्ट्स डिपार्टमेंट तर्फे. मी डॉक्टर अजय लोखंडे सरांना सुद्धा खूप खूप धन्यवाद देऊ इच्छितो. तुमचं असं सहकार्य असू द्यात सर, आणि आपण पुन्हा एकदा भेटूया नेक्स्ट सेशनसाठी. उद्याचा सेशन जो होणार आहे आपला, त्याचं तुम्हाला लिंक आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मिळणार आहेत. पुन्हा एकदा थँक्यू व्हेरी मच सर, आपला खूप खूप आभारी आहे. थँक्यू व्हेरी मच.